हाय स्टूडेंट्स, द चैलेंजेस पे आप सबका स्वागत है। ओके तो मैंने जितना भी पढ़ाया है और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर आपको इसे सॉल्व करना। ओके, यू हैव टू सॉल्व दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2020 टिल 2024. Okay, so it's going to be very helpful for you. Please watch this video till the end ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके बोर्ड एग्जाम का। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट दे सकूं और बेस्ट कर सकूं ताकि आपका बोर्ड एग्जाम इस बार बहुत अच्छा हो एंड बहुत अच्छे सिंपल वे में आप केमिस्ट्री की मिस्ट्री को समझ सकें। ओके, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन एंड पुट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। सो मैग्नीशियम Mn इज बैलेंस्ड, देन द नॉन मेटल। सो नॉन मेटल हियर इज क्लोरीन 2 and 2, so 4 chlorine is here, so here also there must be 4. okay, now after 4, अब मैंने यहाँ 4 लगाया तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन चेंज हो गया हमारा, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 है, तो अब अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हाइड्रोजन। ओके, नाउ आवर हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड एंड फाइनली ऑक्सीजन। तो हियर इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज 2 ऑक्सीजन एंड हियर आल्सो देयर इज 2, सो आवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो हमारा x क्या हो गया 4, y क्या हो गया 2 and z is 1, so the correct option is 4 2 1. okay, now let's move on to the next. Identify x, y and z in the following reaction. सोल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेक इट। सो एक्स, सो हियर फर्स्ट विल बैलेंस द मेटल, मेटल हियर इज K, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। नॉन मेटल क्लोरीन, दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ओके, तो जहां पे भी ऑड होता है, अगर ऑड है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, उसे इवन बनाते हैं। इवन बनाने के लिए किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हियर ऑक्सीजन बिकेम 3 2 6। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 ही है, so you'll have to multiply here with 3, so 3 2 6. But what problem arose here, that potassium हो गया 2 और क्लोरीन भी हो गया 2, तो हम क्या कर सकते हैं, we can put here 2, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया 2। y, what is y, एरो के ऊपर हम क्या देते हैं, एरो के ऊपर हम देते हैं जो भी रिएक्शन है उसके इंफॉर्मेशन। तो यहाँ कैटलिस्ट यूज हो रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके, MnO2, manganese dioxide. So y here is MnO2 and Z is what? Z, the value of Z is 3. Okay, so ये हो गया हमारा question number 2. Now let's move on to the third. In the previous video I've already told कि ये question बहुत बार पूछा गया है in other exam also, in Jharkhand board and all also it has been asked. State the law used for balancing chemical equation. So which law we are using? Law of conservation of mass. Okay, that the mass of the reactant before the reaction and the mass of the product after the reaction remains same. Now select endothermic reaction from the following. Which one is endothermic reaction? Decomposition of vegetable matter into compost, decomposition of calcium carbonate to form quicklime and CO2, burning of a candle, process of respiration. So which one is an endothermic? Endothermic मतलब जो heat absorb कर रहा है, तो the answer is B. कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक करता है क्विकलाइम और CO2, ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एब्जॉर्ब करता है हीट। नाउ नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यू ऑल नो, you can go to the description box and check it out from there if you want in detail, but अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि reducing agent क्या होता है, जो दूसरे एलिमेंट्स में या दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करेगा या ऑक्सीजन रिमूव करेगा, मींस इट विल कॉज द रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या मिल गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन मिल गया, तो ऑक्सीजन को मिल गया है हाइड्रोजन, तो कहां से मिला, हु गेव इट, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन किसने दिया, NH3. So NH3 is the one who is adding, which is adding hydrogen to oxygen. NH3 से ही इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो यहाँ
NH3 is the reducing agent. So in your exam you will write NH3 is the reducing agent. Next, H2O plus F gives HF plus HOF. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे F2 फ्लोरीन में हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्या बन गया यहाँ पे HF, फ्लोरीन हाइड्रोजन हैज गॉट एडेड टू फ्लोरीन. तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, फ्रॉम वाटर, H2O. So here H2O is the reducing agent. All right. Now in next question, try it for yourself. Okay. Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. Now here Fe2O3 का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ. हियर यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. बट व्हाट इज द अदर डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के टर्म्स में रिडक्शन नहीं दिख रहा है हमें, बट वी कैन सी हियर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम Fe2O3 एंड इट हैज बिकम Fe, आयरन. तो ये जो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, किसने किया रिमूवल, CO ने किया. तो हियर CO इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. ओके, सो हियर CO इज द रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व. जस्ट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. ओके, सो हियर यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कहाँ से मिला, H2 से. सो हियर हाइड्रोजन इज द reducing agent. Okay, I hope it's clear to you. Now this question is a diagram question. Now next question, it's a diagram question. A diagram is given, brown fumes written over here and lead nitrate. It means, and heat is being given. It means the decomposition of lead nitrate is taking place, isn't it? तो decomposition जब होता है lead nitrate का तो क्या बनता है, PbNO3 whole 2. When it decomposes in the presence of heat, that is thermal decomposition, तो क्या बनेगा, lead oxide PbO plus nitrogen dioxide plus oxygen, isn't it? So which gas is released, nitrogen dioxide gas. All right, so select the correct statement. Thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of NO2. Thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of lead oxide. Oxidation of lead nitrate forming lead oxide. So oxidation is not happening here. Oxidation, तो ये हमारा, ये दोनों rule out हो गया. These two are rule out and let us discuss these two. Okay, तो ये दोनों को जब हम compare करेंगे तो brown fumes यहाँ लिखा है NO2 and here it is written lead oxide. So which gas produces brown fumes, nitrogen dioxide, isn't it? So the option A is correct. Okay, now next one reaction is given. I already told you in my previous video, you can see, go and check that it's given that you will have to classify that which kind of reaction it is. Okay, so it's that kind of question only. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime. So calcium oxide reacts with water to produce slaked lime. Okay, so what kind of reaction is this? First of all, it is a combination reaction. And a hint is also given that it reacts vigorously, isn't it? It produces heat. So it is a combination as well as exothermic reaction. So the option D will be correct. Both A and B. Alright children, you have to be very careful with such questions. Read it properly. Now next is, a student took sodium sulfate solution, a test tube and added barium chloride solution to it. ओके, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपका यहाँ पे आ गया सोडियम सल्फेट, राइट हियर Na2SO4, and barium chloride is added, so BaCl2 is added. I hope you all can write the formula now. He observed that an insoluble substance is formed. The color and molecular formula of the substance is, so here double displacement reaction is taking, no, NaCl will be formed plus barium sulfate, BaSO4, precipitate will be formed. So what is the color of barium sulfate? White. So white BaSO4 is formed. Okay.
Now next question is, study the diagram given below and identify the gas formed. It's very easy. Zinc and HCl is zinc granules are taken and HCl has been added to it. So which gas is produced? Hydrogen. Okay, and the option here is given hydrogen, which while burning produces a pop sound. So you don't have to get confused. It's a प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जब भी बर्न होता है कभी तो पॉप साउंड से बर्न होता है. कहीं पे अगर हाइड्रोजन गैस यहाँ here it is released, no, if you'll bring a burner, no, a pop sound will be heard. Okay, so don't get confused, this is the correct answer. Now the last question, which among the following are or is the double displacement reaction? So here only single displacement, this is also oxidation reaction, this is also oxidation, so the second one, that is B, only B, sodium sulfate plus BaCl2C. Just now we did this reaction here, है ना, हमने किया ना, BaSO4. Okay, so this is the double displacement here, double ions are getting exchanged. All right, so this much only for today's class, student. I hope you like the class, and if you are liking my class, अगर आपको सब चीजें समझ आ रही है, then please like, share and subscribe my channel, because I'm going to come up with many videos more, and also not only chemistry, I'm going to give you lot much more in physics and bio too. Thank you, children. Bye. Take care.